Okay. It started, okay. अभी कर लो admit. Yep. A very good afternoon to everybody who has joined today's press conference. My name is Milind, and on behalf of Praja Foundation, I would like to welcome all of you to today's conference. As you all are aware, we have been working in the city of Delhi over the last 6 odd years and coming with periodic report cards and various white papers to demystify how governance is being delivered in the city of Delhi. Praja, of course, has been doing this in Mumbai for a longer period. And over the last 3-4 years, we also have expanded to other parts of the country where we look at urban governance structures. And there's an interesting report that we have done on urban governance index to rank efficiencies and gaps in the system. But coming to today's topic, I would first like to welcome the panel who is there with us. We have Shanti Narayanji, who is from our partner organization, Agenda for Governance. We have my colleague, Yogesh Mishra, who is the head of research at Praja. And of course, I would like to welcome all of you, our friends from media and civil society who have joined us today for the press conference. Thank particularly our supporters, including Felix Newman Foundation, Madhumena Foundation, and others who have been supporting this program. Before we start, I really want to acknowledge the effort that our team has put over the last few months to collect this information, data, process it in this difficult period that we are living in. I think COVID has, of course, changed the way we are functioning, and the team really worked hard to put this report together. So I really definitely want to congratulate the team on this. This is fifth report that we are doing on the report card where we are ranking municipal councillors. For this current term, this is the fourth report. We've been doing it for each year of this current term of municipal councillors. However, given the situation of COVID and because of which meetings were not happening, deliberation was not happening, we thought that this year it would be appropriate to do an annual ranking of the councillor, but also looking at that the term is getting over, we have combined the 4-year performance and come up with a consolidated report card to look at how the councillors, how our municipal councillors have really performed in the last 4 years in the city of Delhi. I'm going to hand over to Yogesh, my colleague, to give the highlights of the report and how we are kind of gone about doing it. And then I'm going to request Shantiji to share his views on the report and what should be really the takeaway and what people should be doing. And then we can open up the floor for question answers. I also request in the meantime that if our friends from the media have any questions, they can put the question in the chat box. In the chat box, my colleagues have also put in the links to the reports, which you can download in the meantime and also go through it as Yogesh is making the presentation. Over to you, Yogesh. Thank you, Milind. So, दोस्तों, जैसे कि मिलिंद ने कहा कि इस साल हम यूजुअल एनुअल रिपोर्ट कार्ड ना निकाल करके एक कंसोलिडेटेड 4 वर्ष का समग्र रिपोर्ट कार्ड निकाल रहे हैं ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज ऑफ हमारे निगम पार्षदों पे। सो सबसे पहले हमने इस रिपोर्ट कार्ड को बनाने के लिए उनके हर एक वर्ष के परफॉर्मेंस को हमने देखा, फिर उसको हमने उसका एवरेज निकाल करके उनको परफॉर्मेंस क्या निकल के आ रहा है, आउट ऑफ 100 क्या स्कोर्स मिल रहे हैं, उस तरीके से हमने उसको देखा। ऐसे भी कई पार्षद थे जिन्होंने और इस रिपोर्ट कार्ड के लिए हमने उन्हीं पार्षदों को इंक्लूड किया है जिन्होंने एटलीस्ट 2 साल एज अ पार्षद कंप्लीट किए हुए हैं, चाहे वो मेयर्स हो या कोई भी पार्षद हो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के। और किसी पार्षद ने अगर किसी वर्ष वे मेयर रहे हैं या किसी वर्ष उन्होंने सर्व नहीं किया है तो उनको वेटेड स्कोर दिया गया है कि अगर उन्होंने सिर्फ 2 वर्ष के लिए एज अ पार्षद काम किया है तो उनका परफॉर्मेंस 2 वर्ष के लिए ही एनालाइज किया गया है ऑन अ वेटेड एवरेज स्कोर को लेकर के, ताकि इक्वल तरीके से सबको रैंकिंग की जा सके और क्यूमुलेटिव ओवरऑल परफॉर्मेंस हम देख सके कि हमारे पार्षदों ने पिछले 4 वर्षों में किस तरह की परफॉर्मेंस दी है ऑन देयर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज।
तो इससे पहले कि हम रिपोर्ट क्या कहता है, हमारा ये 5वां रिपोर्ट कार्ड है। पहला रिपोर्ट कार्ड हमने 2016 में पब्लिश किया था। सो हम कुछ जो हमारे लर्निंग्स रहे हैं या हमने उससे क्या समझ पाया है वो हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहला तो ये दिखाई देता है कि जो पार्षदों को की जो एक मेजर रोल है जो कॉन्स्टिट्यूशन उनको देता है कि वो उनको रेलेवेंट मीटिंग्स में, कॉर्पोरेशन मीटिंग्स में भाग लेना होता है। वहां पर जनता की समस्याओं को, जनता के कंप्लेंट्स को डिस्कस करना, डेलिब्रेट करना और उस पर सॉल्यूशंस लाना, ये उनका मेजर रोल होता है, जिसके लिए उनको अटेंडेंस, उन मीटिंग्स को सबसे पहले अटेंड करने की जरूरत होती है। हालांकि अगर हम आगे चलकर, जिस पर मैं आगे बात भी करूंगा डेटा के साथ में, कि जैसे ही पार्षद टर्म प्रोग्रेस होता है पहले वर्ष के मुकाबले आगामी वर्षों में उनका अटेंडेंस गिरता हुआ दिखाई देता है। वहीं जो वेरियस मीटिंग्स होती हैं जैसे जनरल बॉडी मीटिंग, वार्ड एंड स्टैट्यूटरी कमिटी, इवन स्पेशल कमिटी मीटिंग्स जो होती है वो पूरी तरह से उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। हालांकि हम देखें ज्यादा से ज्यादा मीटिंग होनी चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पार्षद हमारे ज्यादा से ज्यादा वहां पर जनता की समस्याओं को रख सके नगर निगम के सामने, और उस पर क्या सोल्यूशन लाया जा सके वो सारा डिस्कशन हो सके। हालांकि अगर हम देखें आगे चल के डेटा में हम देखेंगे कि मीटिंग्स उतनी नहीं हो रही हैं जितनी होनी चाहिए, जितना उसका उपयोग करना चाहिए। अगर हम देखें ऑन एन एवरेज वार्ड कमेटी मीटिंग्स सारे एमसीडीज को लेकर के पर जोन में केवल महीने में एक ही वार्ड कमेटी मीटिंग हो रही है, और जीबीएम अगर हम देखें हर महीने में सारे तीनों एमसीडीज को लेकर के जीबीएम अगर हम देखें सो महीने में केवल 2 ही जीबीएम मीटिंग्स हो रही हैं। ऐसे कई कमिटीज हैं जिन्होंने गत फाइनेंशियल वर्षों में एक भी मीटिंग नहीं की है, जैसे कि रूरल कमिटी ऑफ एनडीएमसी, उन्होंने 2017-18 में एक भी मीटिंग नहीं की है। वैसे अगर हम बात करें एश्योरेंस कमिटी जो कॉन्स्टिट्यूट होती है परफॉर्मेंस रिव्यू करने के लिए एग्जीक्यूटिव विंग के, जबकि अगर हम देखें तो उसमें भी इरेगुलरिटीज रही हैं, वो मीटिंग्स नहीं हो पाई है। और वेरियस अदर स्पेशल कमिटीज जैसे अप्रैल 17 से मार्च 2021 तक अगर हम इन पिछले 4 वर्ष में बात करें तो ये एश्योरेंस कमिटी एक बार भी नहीं मिली है। और फर्दर ये मीटिंग्स इतने कम होने के कारण, अटेंडेंस कम होने के कारण, जनता के जो कंप्लेंट्स को एनालाइज ना करने के कारण, अगर हम ओवरऑल स्कोर देखें जो काउंसिलर्स को मिला है जनता की समस्याओं पर डेलिब्रेशन करने के लिए, तो दिल्ली के सारे काउंसिलर्स को मिलाकर के केवल 38.26% स्कोर मिला है, जो आगे चलकर हम डेटा के साथ देखेंगे कि किस तरीके का प्रभाव पड़ता है आगे। वहीं जैसे मैंने कहा कि कोई भी जनप्रतिनिधि को कॉन्स्टिट्यूशन उनको मैंडेट देता है कि उन्हें सेशंस अटेंड करने चाहिए, मीटिंग्स अटेंड करने चाहिए, जनता की समस्याओं को जितने ज्यादा वो उठा सके ज्यादा से ज्यादा उठा करके उस पर डिस्कशन होना चाहिए, डिस्कशन में पार्टिसिपेट होना चाहिए, और सर्टेन लेजिस्लेशन या किस तरीके के सॉल्यूशंस या स्कीम्स या पॉलिसीज पास करने हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने इस रिपोर्ट कार्ड को तैयार किया है। इसमें वेरियस पैरामीटर्स हमने लिए हैं, जिसमें पास्ट एंड प्रेजेंट पैरामीटर। पास्ट में हम देखते हैं कि उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, किसी भी चीज को समझने के लिए एटलीस्ट उनको लिखना और पढ़ना आना चाहिए, तो हमने क्राइटेरिया रखा है कि एटलीस्ट वे 10वीं पास होने चाहिए, उनके पास पैन कार्ड है या आईटी रिटर्न फाइल करते हैं नहीं, और कितने वेदर दे हैव एनी क्रिमिनल केसेस और नॉट। वहीं अगर हम प्रेजेंट को बात करें तो प्रेजेंट में हम उनका देखते हैं कि जो वेरियस कमिटी मीटिंग समितियां होती हैं उनमें उनके अटेंडेंस क्या रहे हैं, वे कितने इश्यूज रेज कर रहे हैं, किस तरीके के इश्यूज रेज कर रहे हैं एज पर दी एमसीडी एक्ट, और उसका इंपॉर्टेंस क्या है अगेन एज पर दी एमसीडी एक्ट, और सिटीजन्स के कंप्लेंट को कितना प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, और उनका एरिया डेवलपमेंट फंड का यूटिलाइजेशन कितना है। हालांकि मैं बता दूं कि इस रिपोर्ट कार्ड में हमने एरिया डेवलपमेंट फंड के यूटिलाइजेशन को नहीं पकड़ा है, क्योंकि अगर हम जो हमने हमारे रिपोर्ट कार्ड में भी मेथोडोलॉजी सेक्शन में दर्शाया है कि कई इरेगुलरिटीज रही हैं फंड अलॉटमेंट में एमसीडी द्वारा, तो उसको इसलिए उसको इस परख पाना सही नहीं होता, तो इसके लिए हमने उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया है। वही नेगेटिव मार्किंग्स है न्यू एफआईआर केसेस के लिए, जो अगर उनके पास एफिडेविट में उनके एफआईआर केसेस जो मेंशन हुए हैं या उसके अलावा उसके बाद अगर कोई न्यू एफआईआर केसेस आए हैं पोस्ट इलेक्शन, तो उनको -5 वहां पर दिया गया है, और अगर कोई चार्जशीट उन पर है तो उसके लिए भी -5 रैंकिंग दी गई है, स्कोर दिया गया है।
तो सबसे पहले मैं अभिवादन व्यक्त करना चाहूंगा हमारे टॉप 3 रैंकर्स का, शीर्ष 3 परफॉर्मर का। तो अगर हम एनडीएमसी की बात करें, सो सबसे पहला रैंक रविंदर कुमार जी को मिला है, जो कि बीजेपी से है। उनका स्कोर है 77.93%। सेकेंड रैंक मिला है गुड्डी देवी जी को, जिनका स्कोर है 77.88%, जो कि आप पार्टी से है। और तीसरा रैंक मिला है अजय कुमार जी को, जो कि आप पार्टी से ही है, और उनका स्कोर है 78.88%। वहीं हम अगर एसडीएमसी की बात करें, तो सबसे पहला रैंक मिला है कांग्रेस के अभिषेक दत्त जी को, जिनका स्कोर है 79.98%। सेकेंड रैंक मिला है नंदिनी शर्मा जी को, जिनका स्कोर है 74.91%, जो कि बीजेपी से है। और तीसरा रैंक मिला है संजय ठाकुर जी को, जिनका स्कोर है 74.88%, जो कि बीजेपी से है। और अगर हम ईडीएमसी की बात करें, तो प्रथम रैंक मिला है संजय गोयल जी को, जो कि बीजेपी से है, जिनका स्कोर है 77.05%। सेकेंड रैंक मिला है निर्मल जैन जी को, जिनका स्कोर है 77.05%, एंड जो कि बीजेपी से ही है। और तीसरा रैंक भी बीजेपी के अजय शर्मा जी को ही मिला है, जिनका स्कोर है 74.33%। तो आइए देखते हैं कि ओवरऑल परफॉर्मेंस हमारे दिल्ली के नगम पार्षदों का कैसा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, तो किसी भी पार्षद को ए ग्रेड प्राप्त नहीं हुआ है इस रिपोर्ट कार्ड में। ए ग्रेड यानी कि जिनका ओवरऑल स्कोर, ओवरऑल परफॉर्मेंस में जिनका स्कोर बिटवीन 80 to 100% होना चाहिए था। किसी भी पार्षद, चाहे वो टॉप रैंकर ही क्यों ना हो, उनको वो स्कोर प्राप्त नहीं हो पाया है। एट द सेम टाइम अगर हम देखें उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं जो बार ग्राफ लेफ्ट साइड में दिख रहा है, उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस पहले साल के मुकाबले गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ब्लू बार्स देख रहे हैं वो एनुअल परफॉर्मेंस है, और जो येलो बार आपको दिखाई दे रहा है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस है। अगर हम पहले साल के बार से भी और येलो बार में भी कंपैरिजन देखें, तो वो ओवरऑल परफॉर्मेंस भी ड्रॉप ही हुआ है, अगर हम 4 साल के परफॉर्मेंस की भी देखें। तो इसीलिए किसी भी पार्षद को ए ग्रेड नहीं मिल पाया है, और मैक्सिमम पार्षद जो है, ज्यादा से ज्यादा पार्षद वो सी या डी ग्रेड में ही रह पाए हैं। और उसके भी वेरियस रीजंस है, वो क्यों ए या बी ग्रेड में नहीं आ पाए हैं, उसको भी हमने एनालिसिस किया है, उसको हम आगे बताएंगे। और वो किस तरीके से अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं, वो क्लियरली इस रिपोर्ट कार्ड से भी समझ में आता है। आगे अगर हम देखें, तो काउंसिलर का अटेंडेंस कंटिन्यूसली ड्रॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है, पहले वर्ष के मुकाबले तीसरे वर्ष में इस टर्म के। अगर हम एनडीएमसी की बात करें, तो पहले वर्ष में 2017-18 में उनका अटेंडेंस, पार्षदों का अटेंडेंस था 78.8%, जबकि तीसरे वर्ष में जो कि 2019-20 में वो गिर करके 73.38% आ गया था। वहीं हम एसडीएमसी की बात करें, तो वो 79.62% से गिर करके 72.37% पर गिरा है। और ईडीएमसी की बात करते हैं, वहां पे काफी ड्रास्टिक ड्रॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 82.34% से गिर करके 72.64% पर आया है। सो आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे पार्षद अटेंड ही नहीं करेंगे इन कमिटी मीटिंग्स को, तो वो कैसे जनता की समस्याओं को समितियों में या कमिटी मीटिंग्स में उठा पाएंगे। वहीं इसका इम्पैक्ट हमारे क्वेश्चंस, जो इश्यूज रेज करते हैं, उस पर भी दिखाई देता है कि 4 में से केवल एक काउंसिलर, सारे एमसीडीज में 4 में से केवल एक काउंसिलर ही मैक्सिमम इश्यूज में कंट्रीब्यूट कर पाया है। यानी कि जो टोटल 265 पार्षद इस रिपोर्ट कार्ड में रैंक किए गए हैं, उसमें से केवल 69 पार्षदों ने मिलकर मोर देन 50% क्वेश्चन रेज किए हैं। यानी बाकी पार्षदों का कंट्रीब्यूशन इश्यू रेज करने में काफी कम रहा है। सो आप समझ सकते हैं कि अगर ये केवल 69 पार्षद मिलकर के इतना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और अपना स्कोर या रैंक या ग्रेड बढ़ा सकते हैं, सो बाकी पार्षद भी इसी तरह अटेंडेंस ला करके और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न उठा करके वे अपने कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं टुवर्ड्स, ताकि वो जनता के क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सके और जनता की डायरेक्टली समस्याओं को किस तरीके से सुलझाना है उसको इम्पैक्ट कर सके। वहीं अगर हम बात करें, जैसे मैंने शुरुआत में बताया आपको की रिफ्लेक्शंस में, कि वार्ड कमेटी मीटिंग्स और जीबीएम मीटिंग्स, अदर मीटिंग्स भी उतना रेगुलरली जितना उनका उपयोग होना चाहिए उतना उपयोग नहीं हो पा रहा है। अगर इस टेबल में अगर हम देखें कि सारी कमेटी मीटिंग्स मिला करके मंथली एवरेज पर जोन केवल एक ही मीटिंग हो रही है, जबकि जीबीएम की केवल 2 ही मीटिंग हो रही है। और इन मीटिंग्स का क्या महत्व है ये हम सब जानते हैं, एमसीडी एक्ट में भी इसका महत्व दिया गया है। और इस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना, जितना ज्यादा ये मीटिंग उस पे कर सके
उतना ज्यादा से ज्यादा जनता की समस्याओं को वहां पर रखा जाएगा, उस पर उसको कैसे सुलझाया जाए उस पर डिस्कशन हो पाएगा। अगर हम देखें इवन बहुत लोग कहेंगे कि पैंडेमिक के दौरान उतनी मीटिंग नहीं हो पाई, तो अगर फिर भी अगर हम एवरेज देखें तो एवरेज उतना ही रहा है, चाहे पैंडेमिक के बिफोर की भी मीटिंग देखें 2017 में, 18, 19 में भी एक ही मीटिंग एवरेज हो पाई है, जबकि जीबीएम में भी ऑलमोस्ट उतना ही परफॉर्मेंस रहा है। तो पैंडेमिक ने उतना इंपैक्ट नहीं किया है मीटिंग्स को, किंतु नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने उठाने चाहिए थे, अटेंडेंस जितने होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए हैं। और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसको इन सब मीटिंग्स को बढ़ाया जा सकता है। काफी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आजकल है जिनका उपयोग होता है, जैसे जूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, वेरियस तरीके हैं जिससे वो अपनी सुविधा अनुसार जहां पर वो है वहां बैठे बैठे वो मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं, जनता की समस्याओं को रेज कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। और इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के बाद इस पर काफी अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है और वो अटेंडेंस और क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा रेज कर पाएंगे। वहीं एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि क्वालिटी ऑफ इश्यूज रेज्ड, कि किस तरीके के क्वेश्चंस इश्यूज उठाए जा रहे हैं कॉर्पोरेशन की मीटिंग्स में एज पर दी एमसीडी एक्ट। अगर हम देखें लेफ्ट साइड में जो टेबल दर्शाता है, एक भी काउंसिलर को इस पैरामीटर में ए या बी ग्रेड प्राप्त नहीं हो पाया है। इससे ये समझ में आता है कि पार्षदों को ये समझने की जरूरत है कि किस तरीके के क्वेश्चंस या इश्यूज उन्हें कमेटी मीटिंग्स में रेज करने चाहिए। एक्ट में क्या कहा जाता है, एक्ट में किस तरीके के क्वेश्चंस कहे जाते हैं, और उन तरीके उस टाइप के प्रश्नों को या इश्यूज को प्रायोरिटाइज करके ज्यादा से ज्यादा पूछा जाएगा, तो ऑफ कोर्स वो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा कॉर्पोरेशन लेवल पे, लोकल लेवल पे, बिकॉज लोकल गवर्नमेंट का काम ही होता है लोकल इश्यूज को रिजॉल्व करना, और उसी तरीके के प्रश्न और इश्यूज को वहां पर एक्ट में बताया गया है, उसको प्रायोरिटाइज करने के लिए पार्षदों को काफी कोशिश करनी होगी। वहीं अगर हम बात करें जो हमारी जनता है दिल्ली की, वे जो वेरियस एमसीडीज के प्लेटफॉर्म है कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए, वहां पर कंप्लेंट करती है अपनी समस्याओं को लेकर के। हालांकि अगर हम देखें उनके कंप्लेंट्स पर कोई जो डेलिब्रेशंस होते हैं कमिटी मीटिंग्स में, उन पर कोई फोकस नहीं हो पा रहा है। इस पैरामीटर में अगर हम देखें 94% काउंसिलर, 265 काउंसिलर पार्षद जितने इसमें इस रिपोर्ट कार्ड में रैंक हुए, उसमें से 94% यानी 250 काउंसिलर्स ई और एफ ग्रेड में ही रह पाए हैं, और ए, बी और सी ग्रेड कोई भी पार्षद अचीव नहीं कर पाया है, क्योंकि वे जनता को की जो कंप्लेंट्स है उसको लेकर उन्होंने ज्यादा से ज्यादा डेलिब्रेशंस नहीं किया है, वहां पर प्रायोरिटाइज नहीं किया है। तो ये इससे ये दिखने में आता है कि जनता की जो कंप्लेंट्स आते हैं उसको उसका एनालिसिस होना, पार्षदों को उसका डेटा लेना, उसका एनालिसिस होना, उससे उनको समझ में आएगा कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता किस इश्यू से गुजर रही है, और उस पर परमानेंट सोल्यूशन लाना ये काफी महत्वपूर्ण बात है। और ये जो कंप्लेंट्स का डेटा है उसका एनालिसिस करने के द्वारा ही हो पाएगा। आगे अगर हम देखें पार्टी वाइज स्कोर, पार्टी वाइज के लिए हमने एक क्राइटेरिया रखा है कि टॉप 3 रैंकिंग के लिए कि जिस पार्टी में मिनिमम 5 पार्षद निगम में है उन्हीं को हम एनालाइज करेंगे, क्योंकि अगर हम देखें कुछ पार्टियों के केवल 5 से भी कम पार्षद हैं। तो अगर हम ओवरऑल दिल्ली की बात करें तो पार्टी वाइज में सबसे प्रथम स्कोर जो है, सबसे हाईएस्ट स्कोर मिला है बीजेपी को विद 181 पार्षदों के साथ 60.69 का ओवरऑल स्कोर मिला है, फॉलोड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस को 27 पार्षदों के साथ 55.53% का स्कोर मिला है, और आम आदमी पार्टी को 50 पार्षदों के साथ 54.25 पार्षदों का ओवरऑल स्कोर मिला है। नाउ मैं आगे चल के आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा, जो हमने ग्रेडिंग की है और किस तरीके की ग्रेडिंग हमारे दिल्ली मैप में हमारे पार्षदों की ग्रेडिंग किस तरीके से दिखाई देती है, या उनका परफॉर्मेंस किस तरीके से दिखाई देता है, काफी इंटरेस्टिंग होगा। ये देखिए, ये हमारा दिल्ली का मैप है, और ये यहाँ पर हमने राइट साइड में ग्रेड्स दिखाए हैं, उसके कलर कोड्स दिखाए हैं कि 100 to 80% is dark green, 80 to 70% is light green, 70 to 60% is yellow, and followed on जो less than 35% है वो एकदम डार्क मरून कलर में है। और आप देख सकते हैं कि हमें बहुत कम ही, हमें डार्क ग्रीन तो कहीं पे भी नहीं देखने मिल रहा है, और ग्रीन भी हमें कुछ ही जगहों पर दिखाई दे रहा है, और बाकी सब जगह अगर हम देखें तो हमारी आंखें, अगर हम मैं इसको जूम करने की कोशिश करता हूं, अगर हम देखें तो मैक्सिमम रेड
या ऑरेंज या येलो ही दिखाई दे रहा है। तो इस मैप द्वारा हम समझ सकते हैं कि करंटली हमारे पार्षदों के परफॉर्मेंस की क्या स्थिति है उनके कॉन्स्टिट्यूशनल रोल्स को लेकर के। और जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल रोल यही कहता है कि आपका जो मेजर काम है, प्राइमरी काम है, वो ये कि आपको सेशंस अटेंड करने हैं, जनता की समस्याओं को वहां पर रखना है, उस पर डेलिब्रेट करना है, और उस पर क्या रेजोल्यूशन या सॉल्यूशंस पास करना है उस पर आपको फोकस करना है। बट स्थिति आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रही है। सेम चीज आपको हमने लिंक दिया गया है, इसकी सॉफ्ट कॉपी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, मीडिया रिलीज वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, चैट बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, और आप ये मैप भी वहां से एक्सेस कर सकते हैं। सो धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा शांति जी से कि वे अपना इस रिपोर्ट को लेकर के उनकी क्या राय है उसको वे यहाँ पर रखें। शांति जी। Hello, जी शांति जी। can you hear me? Yes sir. Sir, can you sir, switch on your video? just one moment. I'm not able to. My video has been stopped with some. Can someone help? I'm not Yeah, able our team is looking into that, sir. Shantaji, in the meantime, I think you can please Yeah, address. continue. Yeah. Pardon? In the meantime, you can address. I think they will get the video sorted in a moment. Okay, okay. Yeah, Shantaji, you are there. Your video is also on. Please. Hello. Yes, sir. You can hear you. Your video is also on. Okay, okay. Good afternoon, friends. You have received a very comprehensive report from Mr. Yogesh on the study that has been done by Praja. I must compliment Praja for doing a great job despite the pandemic. And I think the conclusions are broadly, we are all in agreement with the conclusions. One aspect which has been commented that the performance has gone down from the first year to the third and fourth years. But partly it is the pandemic itself is responsible because the contact with the citizens could not be done. But this problem has been consistently there right throughout the period. The attendance in the various meetings, statutory meetings, ward committee meetings, all these, the attendance has been rather inadequate. In fact, this aspect needs to be highlighted by the media, that the concept of the councillors' constitutional duties involves their contact with the citizens, and unless they make themselves available at these ward committee meetings, etc., it will not be, they will not be able to discharge their constitutional duties satisfactorily. The second point that I wanted to highlight was about this mayor's tenure. The mayor has a very important role to play in the municipal area, and to give them just a year's term, I think is not doing justice to them. And therefore, the role that the mayor needs to perform, he is unable to do it because of the short tenure. In fact, the mayor should normally have the full 5-year tenure, but even if you, for political reasons, you have to reduce it, let there be a 2.5-year tenure at least, so that the mayor can make some contribution to the overall governance in the city. So that these are the 2 points that I thought you may like to consider to bring to the notice of the government, the municipal organizations. And
we will like to compliment the Praja analysis team that they've done. It shows a deep understanding of the issues that are there, and media may like to take advantage of this analysis to project the issues that have been highlighted. Thank you. Thank you, Shantiji. With this, we are now open for a question and answer round. So, friends from media, you can type your questions in the chat box, and we'll be happy to take that. If someone wants to ask that question directly, you can raise your hands, and our team will allow you to unmute yourself and switch on your video, and you can directly ask your questions to us, and we'll be happy to take that. So we are open for questions now. Okay, so we have received a first question, and I am putting it across to Milind. So Milind, the question is that why did no councillor get an A grade, and what should be the steps taken for a councillor to get better grades in Delhi? Yogesh, can you pull up the graph on quality of questions as I answer this particular issue? Sure. Yeah, thanks. So the reason I wanted to pull up that graph was that if somebody wants to really get the top rank in the Praja report card, it's about doing your constitutional duty. The constitutional duty of the councillor, हमारे जो पार्षदों का जो मुख्य काम है, वो उसको है कि हाउस में जाए, अटेंड हाउस की मीटिंग अटेंड करे, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग करवाए, और जो मुख्य इश्यू होते हैं, जो समस्या होती है जनता की, वो वहां पे लेके आए और उसके ऊपर कुछ काम करने की कोशिश करें. If they are able to do that work, if they are able to legislate, if they are able to monitor policies over there, that's where the ranking is going to go up. And the reason I've put up this particular graph is that it shows where our councillors of this particular term are lacking. Our councillors not ask questions which are of good quality. Of course, there's a problem with the attendance. We saw a graph where the attendance has fallen down consistently over the years in this term. And that shows the lack of interest that the councillors probably have had in terms of trying to resolve issues in the forum which is available to them. We are looking forward for in the next few months for the new elections, for the elections to be there for the NCT. I think this is a clarion call for our political parties to really look at whom they are giving their political their tickets for this election. There were 69 councillors in this current term where we are ranked about 265 of them. जिन्होंने सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे हुए, almost उन्होंने almost 50% of the question उन्होंने पूछे. If we actually have councillors who are deliberating a lot, this 69 should be probably those 265. That's something which we need to really look at it. I think this is a responsibility, a collective responsibility of all the political parties, that they need to give us good candidates, and the citizens of Delhi, that we need to really look at whom we are electing. Otherwise, we are going to have the same round of analysis that we'll probably produce after the next 3, 4, 5 years into the term of the upcoming 20 to 27 councillors. Where, I mean, this is the same pattern which may come up. Like, if we want to change it, we really need to have councillors who understand their job and are able to perform their role most effectively. Thank you, Milind. The next question is for Shanti ji. Shanti ji, आपने जैसे कहा कि पार्षदों का काम है कि वे जनता के टच में रहें, उनकी समस्याओं को समझे. तो एक प्रश्न आया है, why the score on citizens issue is low, and what needs to be done to better the representation of Delhi citizens issue in the committees? I think there has been several attempts to ensure that these ward committees should also include the RWA in each region, and also ensure that the issues that the RWAs or the citizens raise, they should be studied
and they should try to find out how to solve those problems. I want to share with you an exercise that was done in the first year of the AAP government, when they asked the RWAs to give them 3 major, most important projects that they would like the government to, municipality to execute. And a study was also done of seeing how many of those projects could be included. The results were very surprising, because what came out was that there was no dearth of funds, and there was no difficulty in ensuring that the first 3 most important projects of every RWA could be implemented. Unfortunately, the study was done, but this implementation has not taken place. And I would be looking forward to the new House, whether they will like to act on this study that was done, and the results which they brought out are are certainly very, very encouraging. So that's the way things should happen in the future. Thank you, Shantiji. I'm requesting our media friends to ask questions related to this report card. If you have any doubts, you can surely put it up on the chat box, or you can raise hand and we'll unmute you to ask your questions directly. So, Milan, we have got a next question for you, that have respective MCDs taken note of the recurring fall in performance, and have they shared any inputs regarding the same? Well, the report card, the way we have done it is primarily targeted towards the councillors. The primary audience for the report card is the councillors themselves. The idea why we started about 10 years back was that each of us in our professional lives, we get a performance appraisal every year. It allows us to do 2 things. One, understand what are our strengths. 2, look at the areas where we can improve. And we wanted to actually give it to our councillors and MLAs on a regular basis, so that over the 5-year term, they get opportunities to actually get a feedback and improve on their performances. And that's why the report card always has been targeted towards the council and not to MCD or somebody else. We are not really looking, we are not interacting with the MCD directly on the report card per se. There are other reports that we have, the white papers on civic, education, health, where we interact with the MCDs. But we do definitely interact with the councillors once the report card has been released to see how they would like to reflect on the ranking which has been given, and help them to actually improve on areas where they would want to improve. Like we have fellowship programs, we have trainings that we do for them as well. Like, so there are 2 sides of the program that we have. One is of course the reports, other is where we actually do a lot of capacity building work. Because ultimately our councillors play a very, very important role in the life of our citizens in ensuring that we get good quality services. And that's why this report is actually targeted towards them. Our friends in media, our friends in civil society have been very helpful to take the report to the councillors. The senior leaders in political parties have been appreciative about the report, and it's an ongoing conversation and dialogue that we are having to help our councillors and the elected and the political wing to really to reflect upon what needs to be done to improve governance in the city of Delhi. Thank you, Milan. We have a following question in a similar line, so probably you can talk more about the workshops and training programs that we do. The question is, it is now time to build pressure on political parties to nominate candidates with minimum qualification and experience. Is Praja doing anything in that direction? I think the minimum qualification and experience, as the way the constitution looks at it, is very open-ended. The constitution only looks at people having a certain age. They should not be having any criminal background as defined by the People's Representative Act, and of course, they should be sane. So from that perspective, it's a prerogative of the political parties to really nominate candidates. But once they have been nominated, I think, and once they even get elected further, I think it's up to the political parties and the civil society to see where we can actually create resources for the councillors who get elected to perform much better. It's of course the job of the councillors to look at those resources and utilize those resources. And one of the way to do that would be if political parties
and and civil society runs a lot of these workshops and training programs where we engage with our councils once they get elected to build their understanding about issues and look at innovative solutions. Praja has been doing that over the last few years in Delhi as well. Of course, in Mumbai, we've been doing it for a longer period. And we have found very good results over there. Like councils do look for these trainings whenever they are offered, and they do try to take this advantage of those trainings. Also, the fellowship programs that we do. But I would like to point a gap over here, which our system needs to really highlight and sort out. We don't give our councillors and proper office or a proper set of people as researchers or office people who would help them do their job in more progressive manner. We do give some kind of support to our MLAs and MPs. Even that requires a little more update, but that's something that as a society we need to think about it. Our lives really get affected by the governance which we get delivered through our maybe MCDs or state or government or the central government. And if we are not electing and empowering our leaders who get elected over there adequately with proper resources, then that's something which is a disservice to the nation. Like we need to think on that at a macro level, at a local level, or a more ground level. Like I think each of the councillors who get elected, they need to definitely look at improving their understanding, and that's an effort that they need to take. If they're not taking the effort, a report card like ours is going to show where they are falling back. And if that happens, I think it's up to the citizens to really take the call and ensure that only the right kind of people get into the system and stay into the system. Thank you, Milan. So someone has requested to share the details or the scores of Adesh Gupta ji, Delhi BJP president. Friends, we have in our report card, we have detailed score sheet starting from page number 61. And you can view the details of each and every councillors with their overall score, their ranking, and their scores on each parameter. With regards to Adesh Gupta ji, his total score is 50.34% with D grade, and his ranking 80 in NDMC. So we have another question, that although the constitution says that elected representatives should raise questions in the house and should make maximum utilization of funds, etc., and does not talk about people's perception, do you think that people's perception is also important while ranking them? Milind. People's perception is the most important part. Ultimately, whatever the act and the constitution says, it's we the people who are given the constitution ourselves. So our views are paramount. Having said that, in the report card earlier in the early years, we used to have a third parameters where we used to actually do a very wide survey of the citizens of Delhi. We used to, I think, go to about 29,000 households, do a very deep understanding of their perception of their councillors and the work that they're getting, the services that they're getting, and then we used to kind of rank it back into get the parameter back into the report card to rank the councillors. But we stopped it about a couple of years back, and the reason was that after doing about 25 odd report cards over a period of about 8 odd years, we had a lot of evidence and data that showed that a councillor who is deliberating well in his area, there's a strong correlation with the perception of people about his delivery as well. And that's one reason we kind of really stopped going to the citizens to do the perception mapping, but we are relying solely on looking at the parameters of what the councillors are doing in the house to do the ranking. Of course, citizens of Delhi are now going to get in the next few months right to express their perception when elections come up, and that would be really one way to look at how people are going to get a feedback from the citizens as well. And that's one reason, one part which we kind of change over the years when we've been doing this analysis of our councillors. Thank you, Milind. There's a question that have there been any positive developments regarding the councillors' performance this year?
जैसे कि हमने पूरा प्रेजेंटेशन आपको दिखाया, हर पैरामीटर पे हम आपको उसका क्या एनालिसिस हुआ है उस पर हम लेकर के गए। तो परफॉर्मेंस, चाहे उनका अटेंडेंस हो या नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो या क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस हो, वो डिक्लाइन ही हुआ है एज कंपेयर टू द फर्स्ट ईयर ऑफ द टर्म। बट एक पॉजिटिव चीज मैं इसमें देखना चाहूंगा, जो हमने दोबारा भी स्क्रीन शेयर करके बताया था, कि अगर 69 काउंसिलर्स आउट ऑफ 265 रैंक, अगर वो 52% ऑफ द टोटल इश्यू रेज्ड कर उठा सकते हैं, सो बाकी के काउंसिलर्स अगर उतना फोकस करें या अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन और बढ़ाएं, तो वो जनता की समस्याओं पर ज्यादा डिस्कशन वहां पर हो सकता है। और जैसे कि मिलिंद ने कहा कि वो 69 को 265 पर आना जरूरी है, कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस उठा सके वहां पर। सो वो एक पॉजिटिव एलिमेंट वहां पर मैं देखूंगा, एंड आई होप कि हमारे पार्षद उस पर ध्यान दें, उस पैरामीटर पे ज्यादा फोकस करके ज्यादा से ज्यादा प्रश्न वहां पर उठा सके। योगी, मैं और एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। हमारे जो पार्षद होते हैं, जो वो सबसे when it comes to democracy, the local government is the most closest to the citizens, and हमारे जो पार्षद होते हैं वो हमसे काफी नजदीक का रिश्ता रहते हैं, और नॉर्मली हमारे लोकेलिटी में ही रहने वाले लोग होते हैं। They have been also very active during the last couple of years during the pandemic. We have seen it in various cities. Delhi is not an exception. Of course, Delhi maybe हमने वो देखा है. And that's the more reason that as an organization, we do believe that हमें हमारे local government को और strengthen करना होगा, हमें city government को और strengthen करना होगा, हमें उस तरफ मूव करना होगा जहाँ पे हमारे local government maximum control हो हमारे services के ऊपर, ताकि we as citizens can actually demand, because that's more closer to us. We can go to the councillor, we can go to the elected, to the ward offices, to the corporation, and actually demand better services. Like while going to state government or the central government is quite far away. Like it's really not possible. Like always, and that's something which we need to really reflect upon. Like we are entering the 75th year of independence. We have come a long way over the years. But that's one area where we have, I think, not adequately paid attention. We have not empowered our cities enough, and our India today lives in cities. Probably we lived in villages some time back, but now we really live in cities. We need to empower cities if we want good quality of life, and that's something that we need to try and strive towards. Thank you, Milind. We are happy to take last couple of questions. So Shanti ji, we have a question for you. जैसे कि हमने इस रिपोर्ट में ये देखा कि मेयर्स के परफॉर्मेंस, जो मेयर्स रहे हैं इन द फॉलोइंग इयर्स, उनके परफॉर्मेंस आफ्टर कंप्लीटिंग देयर टर्म एज अ मेयर, टेन्योर एज अ मेयर, उनका परफॉर्मेंस चाहे वो अटेंडेंस हो या नंबर ऑफ इश्यूज हो, वो ड्रॉप होता हुआ दिखाई देता है। और जैसे आपने कहा कि मेयर का जो टर्म है वो एटलीस्ट 2.5 इयर्स का होना चाहिए, तो इसमें हम कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, या कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस होने की वहां पर सर कोई संभावनाएं हैं? Basically, it is for the governments to look at this aspect, because the constitutional provision of a mayor is there mainly to coordinate the working of the councillors, and unless he has a long tenure, adequate tenure, he cannot deliver, and that is what is happening today. Unless this tenure is increased and the role of the mayor is redefined to ensure that the coordination part is discharged by him, he needs to be a very visible figure who can make a difference in the functioning of the ward committees, or the various other committees, statutory committees. And that role at the moment is not being discharged by anybody. There's no coordination on these, and there's nobody monitoring the performance of these committees. That is something which needs to be done. And unless the linkage between the citizen and the elected representatives improves, there will not be much of an improvement in the governance structures. So I think this has been the recommendation in a number of reports which we have sent to the government from the IC Center for Governance. And I think Praja has also done a lot of work on this aspect, and their recommendations have also been conveyed. So I think
there's no shortcut to this, and it has to be done through the intervention of the government at the political level. Thank you, Shanti ji. So if we have no more questions, does anyone wants to ask questions directly by raising their hands? We will be happy to unmute them. We just have 2 minutes left. Okay, so with this, I would like to thank everyone who has joined this press conference. Who has joined this press conference and on a very important topic, considering we have हमारे नगर निगम के अगले वर्ष चुनाव होने वाले हैं. So हम यही आशा करते हैं कि हमारे पार्षद, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल पार्षदों के जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स होते हैं उस पर ध्यान दें और उसको कैसे इस रिपोर्ट कार्ड में रैंक किया गया है या एनालाइज किया गया है उसको परखें, समझें और आगे चल करके जो उनके डिसीजंस हैं या किस तरीके के पार्षदों को टिकट्स देना चाहिए या कैंडिडेट्स को टिकट देना चाहिए और उस पर वो इन पैरामीटर्स को लेकर के सोच विचार करें आपस में और हमारे सिटीज को बेहतर बनाने के लिए किस तरीके से हमारे सिटीज को, मेयर्स को, पार्षदों को एम्पावर किया जा सके उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है. सो इन ऑल अगर मैं कहूँ तो ये समग्र रिपोर्ट कार्ड हमें ये बताएगा या दर्शाएगा कि आगे चल करके दोनों के लिए, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो या जनता हो, कि किस तरीके के कैंडिडेट्स को हमें टिकट देना है या किस तरीके के कैंडिडेट्स को हमें चुनना है और उन्हें इलेक्ट करके हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए हम जो उन्हें कमिटी मीटिंग्स में या कॉर्पोरेशंस में भेजना है ताकि वो हमारी समस्याओं को समझ सके, परख सके और उस पर वहां पर जो सही तरीके से डेलिब्रेट कर सके विद प्रॉपर क्वालिटी, विद प्रॉपर प्रोसेस और हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट, दिल्ली के जनता के लाइफ में क्वालिटी ऑफ इंप्रूवमेंट की तरफ एक पहल, एक शुरुआत हो सके. सो विद दिस, थैंक यू सो मच एंड वी आर नाउ क्लोजिंग दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस. थैंक यू.